ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुनेंगे भगवद गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 22। आइए सुनते हैं। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्ताम समुदारुतम्। कृष्ण भगवान जो अर्जुन को यहाँ पर जो समझा रहे हैं उसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि जो रजोगुणी होता है वो तो बता दिया कि हर एक शरीर में हर एक प्रकार के जीव देखते हैं, उस ज्ञान को रजोगुणी बोला जाता है। उससे आगे का आज का श्लोक है, और उस ज्ञान को तामसी कहा जाता है जिससे मनुष्य अति तुच्छ होकर और ऐसे कोई एक प्रकार के कार्य को सर्वे सर्वा मानता है और उसको सत्य नहीं समझता है और उसका सत्य नहीं जाने बिना भी वो उसी में आसक्त रहता है, और ऐसे कार्य को तामसिक कहा जाता है। Let us listen to it in English. Again, that knowledge which clings to one body as if it were the whole and which is irrational, has no real grasp of truth and is trivial, has been declared as તામસિક. ચલો ગુજરાતીમાં પણ સાંભળી લઈશું. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. એ પછીનો શ્લોક આપણે ફરી ક્યારેક સાંભળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.